ஸ்ரீ மாதாஜி எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரத்தா பக்தி சமர்ப்பண பாவத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி வந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சந்தோஷ சித்தத்தோட சின்ன குழந்தையோட நிலையில் தியானத்துக்கு உட்காருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருவடியை பார்ப்போம். இரண்டு உள்ளங்கையும் உச்சந்தலையில் நுணர்வுகள் உணருமான் கவனிப்போம். வலது கை இருதயத்தில் வைத்து முழு மரியாதையோடு மிகவும் அன்போடு ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்முடைய ஹிருதயத்தில் அழைப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஹிருதய கமலத்தில் அமருங்கள் தாயே. தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். இன்றைய தியானத்துக்கு அனுமதியை தந்து வழிநடத்துங்கள் தாயே. இன்றைய தியானத்தில் எங்களுக்கு ஆனந்த நிர்விசார நிலையை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக வலது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். கண்களை மூடி நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட திருவடியை பார்ப்போம். மெதுவாக கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். நுண்ணுதிர்கள் நிலையை கவனிப்போம். மூன்று மகா மந்திரமும் ஸ்ரீ கணேஷ் மந்திரம் கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ओम
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। माताजी தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. எங்களுடைய பாதங்கள் தாங்கள் மீது வைக்கலத்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. மாதாஜி தங்களுடைய அன்பு சக்தியால் எங்களுக்குள் உள்ள எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் தங்களுடைய பூமி தத்துவத்துக்குள் இழுத்துக் கொள்ளுங்கள் தாயே. எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள், எங்களை சமநிலையில் வைத்திருங்கள். आदि भूमि माता साक्षात ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீது வைப்போம். மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய இடநாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய இடநாடியை பாதிக்க தமோ குணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கி விடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவரோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. பிங்களா நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்து ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடிக்குள் வாருங்கள் தாயே.
எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்க ரஜோகுணத்தோட எல்லா விதமான எதிர்மறைகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் உள்ள அதிகப்படியான உஷ்ணத்தையும் வாயு மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். எங்களை தூய்மைப்படுத்தி எங்களுக்குள் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ ஹனுமானோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். இடது கை மடிக்கி கொண்டு வருவோம். இரண்டு உள்ளங்கையும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி வைத்து முழு கவனம் நடுநாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சுஷும்னா நாடிக்குள் வாருங்கள். எங்களுடைய ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதையில் தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. தடையில்லாமல் வைத்திருங்கள். சமநிலையை தந்தருளுங்கள். எங்களுடைய கவனம் கடந்த காலத்திலேயோ பிற்காலத்திலேயோ இல்லாமல் நிகழ்காலத்தில் தியான நிலையில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேஷாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். எங்களுக்கு கள்ளம் கபடமற்ற தூய குழந்தை உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. சத்த சத் விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள். எங்களை பணிவோடு வைத்திருங்கள் தாயே. எங்களுடைய ஆன்மீகத்தில் தடையாக இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய சிந்தனை பேச்சு செயல் எல்லாவற்றையும் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறோம். அதை எப்பொழுதும் தூய்மையாக வைத்திருங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரம், மமகாரம், மமத்துவம், கர்த்தா பாவம் எல்லாவற்றையும் தங்களிடம் சமர்ப்பிக்கிறோம். ஏனெனில் நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். நாங்கள் தாங்களுடைய கருவி மட்டுமே. அதற்கு எந்த பற்றும் கிடையாது.
ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள். எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கணேச தரசீஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अव उत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तसिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं रकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नाद सन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः निक्षुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ஸ்ரீ கணேஷாவோட துணையும் பூர்ண ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்முடைய கவனம் மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். குண்டலினி மாதாவை மனமாற வணங்கி ஸ்ரீ குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக கவனத்தை சுவாதிஷ்டான சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்தி ஸ்ரீ பிரம்மதேவ சரஸ்வதியோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். या केन्दुषारहार धवला या शुभ्रवस्तावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसामञ्जुलवाक्विलासां माहेन्द्रनीलज्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्या मनसा स्मरामि। चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागसोने पुण्ड्रेक्षुपाशां कुशपुष्पबाण हस्ते नमस्ते जगतेगमातः माता मरगदश्यामा मातङ्गी मधुशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी जय मातङ्गतनये जय नीलोफलज्जुदे जय संगीतरसिके जय नीलाशुकप्रिये साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நாபி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய நாபி சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். ஸ்ரீ லக்ஷ்மி நாராயணாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौसेयवासं श्रीवत्साङ्गं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் பவசாகரத்தை சுத்தி வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுடைய பவசாகரத்துக்குள் வாருங்கள். குரு தத்துவத்தை நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் நடு ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ துர்கா மாதா, ஸ்ரீ ஜெகதம்பாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள். सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। மெதுவாக நம்முடைய கவனம் விசுத்தி சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய விசுத்தி சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்குள் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணாவோட எல்லா குணங்களும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. வசுதே வசுதம் தேவம் कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। साक्षात् से आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஜீசஸ் மேரி மாதா, தயவு செய்து எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்துக்குள் வாருங்கள். எங்களுக்கு மன்னிக்கும் சுபாவத்தை தந்தருளுங்கள். மெதுவாக நம்முடைய கவனம் சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு வாருங்கள் தாயே. எங்களுடைய சஹஸ்ர கமலத்தில் ஸ்ரீ ராஜராஜேஸ்வரியாக அமருங்கள் தாயே. சகல சௌபாகியமும் தந்தருளுங்கள். अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबलापर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवन शुभकरी साम्राज्यलक्ष्मी प्रदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संधायिनी वाणी पल्लव पाणि वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराज बिंब वदना धूम्राक्ष संहारिणी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अंबानूपुर रत्न कंगनधरी केयूरहारावली जाडी चंपक वै जयंती लहरी ग्रैवैय कैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडितकरा वीरासने संस्थिता चित्रूपी परदेवता भगवती
श्रीराजराजेश्वरी अम्बारौद्रिणी भद्रकाली बगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणि त्रिपुरान्तकी सुरनुता देदीप्यमानोज्ज्वला चामुण्डा शितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बाशूलधनुकशाङ्कुशधरी अर्धेन्दुबिम्बाधरी वाराही मधुकैटव प्रशमनि वाणी रमा सेविता मल्लाध्यासुरमूकदैत्यमथनि माहेश्वरी चाम्बिका चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा सृष्टिविनाशपालनकरी आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धीकृता ओंकारी विनता सुतार्चितपदा उद्दण्डदैत्यापहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वत आगमादिविनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालितभक्तराजगनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोलकटाक्षवीक्षललितम् ऐश्वर्यमव्याहतम् अम्बा पावनमन्त्रराजपठन दन्ते च मोक्षप्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1999 கிருஷ்ண பூஜையில் அன்னை ஆற்றிய சொற்பொழிவு. Tonight we are going to worship Sri Krishna as Virat. First, it is important to understand the incarnation of Sri Krishna. Krishna word
comes from the word Krishi. Krishi means agriculture. He's sown the seeds of spirituality. And for that, first of all, he had to think, where are we as far as spirituality is concerned? How is the land? So what had happened at the time of Sri Rama, that he created lots of maryadas. And by these maryadas, people started mentally thinking about it. I'm not supposed to do that, I'm not supposed to do this. It was just a mental binding. It was not spontaneous, it was not search. As a result, people became extremely serious. They wouldn't talk much and they wouldn't laugh, they wouldn't enjoy anything. So Sri Krishna decided that first of all, we must remove them from this conditioning. And this conditioning has to be removed in such a manner that they enjoy themselves. Then he found out there were 3 suggestions as far as achieving the goal was concerned. So first one, as he says, is to become a realized soul, Sthita Pragya. To go beyond all temptations, go beyond all ego, go beyond all kinds of conditioning, and to become a Sthita Pragya. Sthita Pragya is where he doesn't feel like ordinary people attracted towards things, but is absolutely detached. And this detached person doesn't take to any grievances, jealousies, all these things. That he told. But how to achieve it, he never told. And the second thing he described is that you must work, you have to work. After all, you have got all the human tendencies is to work. But the fruit of the work, you leave it at the lotus feet of God, or you may call the divine power. This is another trick of his, because he realized how human beings were twisted and how they had an ego. If you tell them something, how they'll misinterpret it. So he took the other way around, that tell them something absurd. Now whatever work we do, your ego is intact, and with that ego, you can never give it up at the lotus feet of the divine. Then impossible. So he made an impossible situation that after some time people will realize that this cannot be done, and they'll give up this idea of leaving everything at the lotus feet of the divine. This was the one, how he prepared the land. Second thing he said, Pushpam phalam toyam. Flowers, fruit, and water. Whatever you offer me, I'll take it. I'll take it. But when you do that, you must have Ananya Bhakti. Ananya means completely single-minded bhakti. When there is not the other. This is only possible after realization.
Only after realization you can put the fruits of your work at the lotus feet of the divine, and only after self-realization you can have ananya bhakti, means the devotion which is singular. These absurd conditions he put for human beings because they were so much complicated. So many people tell me, Mother, we are doing Ananya Bhakti. How? Because we are singing on the street, we are taking the name of God all the time, we are going to Pandaripur, you see, in rags, and for 1 month we walk singing, singing, singing. This kind of absurd ideas about bhakti, he never gave. But it is the way he wanted to neutralize the absurdities of human beings that they thought this was the bhakti, which is not. Ananya bhakti is only possible when you are realized soul, when you are connected with the divine, when there's not the other. This is how he tried to make three-way attack, I should, on human beings, in a way, on their stupidity. Because he thought that if I tell them directly, do like this, do like that, then they'll say, of course we did it, and still we never achieved it. In India, there's a big cult, we can call it, people who go to Pandharpur, for 1 month they walk in rags, singing the songs, and on the way they go on eating food at different places. According to them, this is Ananya Bhakti. And they achieve nothing. They become very sick and very tired and have a very bad old age. But who can tell them? They are all lost in it. So this is a way one could tackle human beings to show their stupidity. And so many people come and ask me, as I told you, that how is it we do so much bhakti of Sri Krishna and we have achieved nothing. So he's the one who prepared the land for sowing. We can say he's the one who was like a very great agriculturist. So his name was Krishi, Krishna. There are so many things I've told you about him, how his name came as Krishna, then as how he was called as Radha, or who was Radha, who was Krishna, and all those things. But when he talked of these things, also he told that you should become Sthitaprajna. That is, they call as Jnana Yoga. Jnana means knowledge. So you should get absolute knowledge. That he didn't say how. That you know what is absolute knowledge, which you can feel it on your fingertips in search of. Another thing is, his speciality was to create discretion in people. He thought by doing all these things in a stupid manner, they might develop a discretion to know that this is not the way you can achieve anything. You have to get your self-realization. Discretion was very important. At this juncture, when we are facing a sort of a challenge of this new millennium, that the whole world is going to be destroyed and all those things people are talking, it is really very important to know through discretion what is good and what is bad. One may talk of something as very good, something as very bad. But the divine discretion is very, very different. Very different, and which acts by itself. Once you are in the realm of divine discretion, you cannot commit mistakes, even if you want to do it. I'll give you my example. We went
to buy a house. And the fellow was, you see, like a beggar. He came, he said, we have nothing, we have no food, they have taken away all our things, and we are just absolutely starving. When they said that, when he said that we are starving, we have nothing. So I felt pity for him. I said, all right, increase the price. First we increase the price. Still he was saying, no, give us more. Still we increase the price. I told my husband, you increase the price. Though reluctantly, he increased the price. Third time again we increased the price. Then he said, no, we'll have something more than that, a little more. Immediately, you see, this discretion worked. And I said, these are hypocrites. I just left them and sat in the car. At the right moment, that was not such a good proposition or anything. But I could see I'm buying it out of my pity, we may call it compassion. But above the compassion was this discretion, which said, nothing doing, you better get out of it. So this divine discretion is a very, very important thing which we should see how it works and should be satisfied with. Not to feel bad that you have missed a chance or anything, but you must feel very happy that this thing has happened and that your divine discretion has taken on. So sometimes it appears that in that divine discretion, you may do something wrong, you have done something wrong. But if it is divine, ultimately, it will turn out to be very good. I gave you a very basic example, but that is also very true when you practice surgery. The discretion of divine discretion is extremely important to play a very great part in our lives. Because this divine discretion gives us the real joy of our being, of ourself, of such. So the third point was for him to make people joyous and happy. But with all these maryadas of Sri Rama, he didn't know how to do it. So to give people joy, he said, all right, let us dance, let us sing, let us play Holi, all sorts of things. And with that, he really originated many things which were sort of not serious, may look frivolous, but in that there was joy expressed. All that he did to give them a full idea as for a Sahaja yogi or for a, we can say for a self-realized soul, what should be the attitude towards everything. But it is not that you have to do it, but it just works out. It is like that. That in the state of Sahaj, you enjoy everything. Enjoyment. And that is what his idea was, to create a sense of joy among people. Many people, there are lots of critics have criticized this part of his life. According to them, religion means you should become just old at the age of 20 years, you should become an old man of 80 years, something like that. Funny ideas of religious achievement. But he talked of joy, and he never talked of renunciation. He never talked that you give up your family, you give up your children, you give up everything. Never, never. He said you must enjoy. Enjoy with detachment. For people it is very difficult to understand. How can it be it is without detachment? With attachment you can never enjoy. If you are attached to something, you cannot enjoy anything in a full way. Like supposing you are attached to your child. Very simple thing, you are attached to your child. If you are attached to your child, then
You will be bothered about things which should not be there, which will not give joy to the child either. You will not allow your child, say, to go out or to talk to people, whatever it is, all kinds of restrictions you will put. But if you have really the divine discretion, then you will know with whom he should talk, where he should go, what he should enjoy, and you will see that he enjoys life.